So volume of combination of solids. So volume of combination of solids. Now, what we need to do is add the volumes different solid shapes. So we'll get the volume of the combination of solid. For example, if you take this example 5. Example 5 is Sunita Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by half cylinder. So we have a cuboid. फेंकने यार माथुर So this is a shed basically, and the height of the cuboid is 8 meter. This is 7 meter, and we have 15 meter. This length is equal to 15 meters. Okay. Now in the question, Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by half cylinder. If the base of the shed is of dimension 7 meter into 15 meters, so this is 7 meter and this is 15 meter, and the height of the cuboid portion is 8 meter, find the volume of the air that the shed can hold. Further, suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy 0.08 meter cube space on an average, then how much air is in the shed? So total volume में से volume of machinery और volume of workers को subtract कर देंगे तो हम लोगों को volume of air निकल के आ जाएगा जो उसमें. So सबसे पहले तो volume of total volume of shed is equal to volume of cuboid plus volume of cylinder upon 2, क्योंकि half of the cylinder है. So this is equal to volume of cuboid will be length into breadth into height, और cylinder का pi r square h upon 2 हो गया. Length into breadth into height करोगे, so this is 7 into 8 into 15. Plus of pi का वैल्यू 22/7. अच्छा, इसका रेडियस डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगा. 7/2 into 7/2 और ये हाफ आगे कर दिया. Into जो हाइट है, हाइट मीन्स दिस इज द लेंथ into 15. So 7 and 7 gone to 11 times. So this is
840 plus 15 into 7 into 11 by 4. 288.75. So this is one 1128.75 meter. So this is the total volume. अब हम लोग को मशीनरी का जो वॉल्यूम है वो दे रखा है. So I'll write it here. Volume of machinery is given as 300 meter cube, and each of the worker occupies 0.08 meter cube, and 20 workers are there. So volume of workers. So volume of workers will be equal to 20 into 0.08. 1.6 मीटर क्यूब. ये वॉल्यूम हो जाएगा वर्कर्स का. अब हम लोगों को निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर. So volume of air is equal to total volume minus volume of machinery. जो अंदर मशीन्स लगे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स. सो टोटल वॉल्यूम है हमारा 1128.75 माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी 300, volume of worker 1.6. So this is 1128.75 minus 301.6. 827.15. Is it clear? Yes, sir. Yeah. लिख लिया ऊपर वाला भी सबने? Yes, sir. Sixth example. A juice seller was serving his customers using glasses as shown in the figure. तो उन्होंने क्या किया था कि ग्लास को अंदर से उसने थोड़ा बेंड कर दिया था जिससे उसमें कम जूस जो है ऑक्यूपाई कर, मतलब कम जूस उसके अंदर रह सके. So a juice seller was serving his customers using glasses as shown in the figure.
The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. So if the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. So apparent capacity मतलब बाहर से जो अगर कोई ऑब्जर्वर उसको देखता तो उसको लगता है कि ग्लास भर के ही है, बट उसने अंदर क्या किया हुआ था, यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल हम बना रखा था। तो इस हेमिस्फीयर के वजह से इसमें जो कैपेसिटी इसका इस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम से रिड्यूस हो गया। ठीक है, जो भी इसका अपना कैपेसिटी रहा होगा सिलेंडर का, उसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो इसमें वॉल्यूम ऑफ जूस which is contained in this will be found out. So a juice seller was serving his customer using glasses as shown. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter. So the radius here is equal to 5 by 2 centimeter. But the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass if the height of the glass was 10 centimeter. So the height is 10 centimeter. The apparent capacity of the glass and its actual capacity. So actual capacity मतलब actual capacity means volume of cylinder minus volume of hemisphere. So volume of cylinder is pi r square h. Volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube. तो आप क्या करो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, h plus 2 by 3r. So 3.14, 5 by 2, 5 by 2, 10 plus 2 by 3 into 5 by 2. So this is 3.14, 25 by 4. So 30 plus 5, 35 by 3. So this is equal to 3.14 into 25 into 30 divided by 12. So 228.95. Pi r square h by 2 by 3 pi r cube. H plus 2. Into 25 into 6.25. Okay. ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग. I'm sorry. Three point one four into 163.54. So this is 163.54 सेंटीमीटर. ठीक है, ये एक्चुअल कैपेसिटी है. और apparent capacity means volume of the cylinder. So apparent capacity, apparent means जो हमें दिख रहा है बाहर से.
So volume of cylinder, which is equal to volume of cylinder is pi r square h 3.14 5 by 2 5 by 2 into 10. So this is 196.25. 196.25 centimeter. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया आपने? एक मिनट. Yes, sir. Done, sir. Seven, the solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. So solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. So height of the cone, this is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. So if the whole diameter is 4 centimeter, so radius will be 2 centimeter. So total height will become 4 centimeter. Determine the volume of the toy. If a right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of volume of the cylinder and the toy. So पहले तो volume of toy निकालना है. So volume of toy is equal to volume of cylinder plus volume of hemisphere. So volume of cylinder के volume of cone plus volume of hemisphere. So volume of cone is 1 by 3 pi r square h plus volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube. Pi का वैल्यू 3.14 लेना है. 1 by 3 pi r square कॉमन ले लेंगे. अंदर h plus 2r बचेगा. So this is 1 by 3 into 3.14 r square, that is 2 into 2 into h plus 2r. Height of cone जो है वो 2 है plus 2 into 2. 1 by 3
into 3.14 into 4, 4 plus 2, 6. 3.14 into 8. 25.12 आ गया. So volume of the toy is 25.12 centimeter cube. अब हमें निकालना है difference of volume of the cylinder and the toy. तो volume of cylinder निकाल लेते हैं पहले. So volume of cylinder is equal to pi r square into h. 3.14, 2 into 2 into 4. So 4 2s are 8 2s are 16 into 3.14. 50.24. Total volume. अब volume, difference in volume. So difference in volume 50.24 minus 25.12. So this is 25.12. Clear? है? Yes, sir. Those who have written this example 7, they can start with exercise 13.2. I will solve it, but you can start it. आगे आगे करो, मैं I will follow you. सर 1 मिनट. Yes, sir. Done. Exercise 13.2. First one is, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. Okay, a solid is in the shape of a cone, okay, standing on a hemisphere. So you have a cone standing on a hemisphere. Right? With both their radii being equal to 1 centimeter. So radius r is equal to 1 centimeter. And height of the cone is equal to its radius. So h is also equal to 1 centimeter. Find the volume of the solid in terms of pi. So यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा. दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. इन दोनों को ऐड कर देंगे. वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारा 1/3 pi r square h plus 2/3 pi r cube
So 1 by 3 pi into 1 into 1 into 1 plus 2 by 3 into pi into 1 cube. So this is 1 by 3 pi plus 2 by 3 pi. So this is equal to pi centimeter cube. In terms of pi तुमको निकालना था वॉल्यूम, पाई ही होगा इसका आंसर. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Second question. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. Okay. So cylinder and two cones on the two sides. एक सिलेंडर हो गया, इसके ऊपर भी एक कोन और नीचे भी एक कोन हो गया. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. So diameter is 3. So radius R will be 1.5 centimeter. And the total height of this is equal to 12 centimeter. If each of the cone has a height of 2 centimeter, so each of these cone, this is 2 centimeter, this is 2 centimeter. So this height will be 8 centimeter. Height of the cylinder is 8 centimeter. Find the volume of the air contained in the model. So volume of air contained, that means volume of this model. So volume of air contained is equal to volume of cylinder plus 2 times the volume of cone. So this is equal to volume of cylinder है pi r square h. This 2 times volume of cone 1 by 3 pi r square h. So 1 by 3, 2 by 3 हो गया, 2 by 3 plus 1, 5 by 3 हो गया, है ना. पाई आर स्क्वायर एच को कॉमन ले लोगे तो 1 plus 2 by 3, 5 by 3 हो जाएगा. तो 5 by 3 पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यूज पुट कर लो. 5 by 3, सॉरी हाइट दोनों का अलग अलग. आई एम सो सॉरी. इसका हाइट 8 है, इसका हाइट 2 है. So this is will be equal to pi का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ, 22/7 लेना होगा. 22/7 into r square को कॉमन ले सकते हैं. r square is 1.5 into 1.5. अंदर जो आएगा h, कैपिटल H is 8 plus 2 into 1 by 3 into 2.
So this is 22 by 7, 2.25 into 24 plus 4, 28 by 3. 7 4 times and 3. 0.75 हो गया. So 0.75 into 4 3 हो गया. 22 into 3 is 66 centimeter cube. Clear है बच्चों? Is it clear to everyone? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now third question. Third question कह रहा है गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. तो जितना उस गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% उसमें सिरप है. ठीक है, उसका सिरप, शुगर सिरप. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. So एक सिलेंडर और दोनों तरफ हेमिस्फीयर. टोटल जो लेंथ है इसका, the length of the gulab jamun is 5 centimeter and the diameter 2.8 centimeter. Diameter 2.8 centimeter, तो जो इसका रेडियस होगा r is equal to 1.4 centimeter हो गया. और जो 1.4 1.4 2.8 इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो हाइट, इसका जो हाइट हो जाएगा वो 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा. क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन is equal to volume of cylinder plus दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, 2 times volume of hemisphere, 2 times volume of hemisphere. So volume of cylinder करेंगे, this is pi r square h plus 4 by 3 pi r cube. Okay, so this is equal to, अब ये वैल्यूज डालेंगे, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो बाहर, 22 by 7 रेडियस 1.4 1.4, अंदर h हाइट 2.2 plus 4 by 3 into r. R is 1.4. So this is we have 22 into 0.2 into 1.4.
6.16 into 6.6 5.6 divided by 3, 6.16 into 12.2 divided by 3. So this is 75.152 by 3. ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है. ऐसे ऐसे कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है और उसका 30% शुगर सिरप है. तो शुगर सिरप का वॉल्यूम अगर हम लोग को निकालना है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30%, मतलब 30/100 ऑफ 45 गुलाब जामुन, मतलब 45 इंटू 75.152 by 3. ये कोई 15 टाइम्स कट कर लिया हमने. So this is 15 into 3 into 10. 338.184. So this is 338.184 centimeter cube. So which is approximately equal to 338 centimeter. So this is the volume of the sugar syrup present in it. This is an important question. Mark कर लेना अपने बुक में. एग्जाम में काफी पूछा जाता है. लिख लिया आप लोगों ने? सर वो साइड राइट पार्ट लिख रहा हूँ सर. डन सर. सबने लिख लिया? Yes, sir. Fourth, a pen stand of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. ठीक है. तो एक cuboid जैसा है. और यहाँ पे conical depressions है. ठीक है. So चार pen, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions. तो यहाँ पे ऐसे कोन जैसा बना हुआ है. ठीक है. So 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 by 10 by 3.5. So 15, 10 and 3.5. ऐसा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के फॉर्म में ही होता है. सो 15, 10, 3.5 दिया हुआ है. सो दिस विल बी 15, ब्रेथ विल बी 10 एंड हाइट विल बी 3.5.
The radius of each of the depression is 0.5. So हर एक कोन का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, right? And the depth is 1.4 सेंटीमीटर, और इनका जो हाइट है मतलब डेप्थ h, so this is 1.4 सेंटीमीटर हर एक कोन का. Find the volume of the wood in the entire stand. So volume of wood will be equal to volume of cuboid, और इसमें से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के अंदर से we'll subtract 4 times the volume of cone. जो 4 कोनिकल डिप्रेशन है, हर एक कोनिकल डिप्रेशन को का वॉल्यूम निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जितना वॉल्यूम ऑफ वुड यूज हुआ है वो हमें पता चल जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. So put the values here now. Volume of cuboid is length into breadth into height minus 4 times volume of cone 1/3 pi r square h. देखो हमेशा इस तरह से इसीलिए लिखना चाहिए, मैं हर क्वेश्चन में जानबूझ के लिख रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि एग्जाम में भी ऐसे लिखोगे तो इसके आगे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो तुमको कम से कम आधे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सही है. डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है और ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक काफी होता है इसमें, है ना. लंबे लंबे कैलकुलेशंस होते हैं, मिस्टेक्स ज्यादा होंगी, तो मिस्टेक्स से नंबर कम गवाओ, उसके लिए कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को लिख के समझा देना है, जिससे कॉन्सेप्ट एग्जामिनर को पता चल जाए कि मुझे आता है. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं. लेंथ ब्रेथ हाइट का, लेंथ है 15, ब्रेथ है 10 और हाइट है 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3. पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ अलग से नहीं दिया है, तो 22/7 ही यूज करेंगे. r स्क्वायर h मतलब 0.5 इंटू 0.5 और हाइट 1.4. तो 7 को कट करेंगे, ये 0.2 आएगा. Sorry, there is a power cut. Just wait for 2 seconds. हाँ जी. So अब हम लोग इसको कैलकुलेट अगर करें, 3.5 इंटू 10 35 हो गया, 35 इंटू 15 525 माइनस 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 4.4/3. So this is 4.4 divided by 3 will be 1.47. So this is 525 minus 1.47. 523.53. So this is the volume of wood. Clear है बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir.
Now fifth question. Fifth question is a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of the top and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. Then when lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो ये कॉन्सेप्ट वही है, जितना वॉल्यूम इसके अंदर डालेंगे उतना वॉल्यूम का वाटर इसमें से बाहर निकल जाएगा। लेट्स से इसमें हम लोग लेड शॉट्स डाल रहे हैं, right? So these are the lead shots which we have put inside it, and vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top. So height h is equal to 8 centimeter. The radius of the top is 5 centimeter. And it is filled with water up to the brim when lead shots, each of radius 0.5 centimeter. So radius of these lead shots is 0.5 centimeter. We have to find the and half of the volume has come out due to these lead shots. So volume of water in out is equal to volume of lead shots immersed. कितना वॉल्यूम बाहर आ गया? हाफ ऑफ द कोन का वॉल्यूम, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका हाफ वॉल्यूम बाहर आ गया है पानी का। और लेड शॉट्स, मान लो नंबर ऑफ लेड शॉट्स n हम लोग डाल रहे हैं, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एक लेड शॉट का वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने, पाई और पाई कैंसिल हो गया, राइट? अब वैल्यूज, और उसके बाद ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर एच मीन्स 5 इंटू 5 इंटू हाइट इज 8 डिवाइडेड बाय 2 is equal to number of lead shots into 4 into r cube, 0.5, 25 into 400 हो गया, divided by 4 into 0.5 cube, this is equal to n. So this is 0.5 by 100. So number of lead shots will be equal to 200. उन्होंने गलत किया क्या? A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeters. The radius of the top, which is open, 5 inches, filled with water up to the brim. Acha, 1/4 of the water flows out. I'm sorry. I've taken half of the water is flowing out. So 1/4 of the water flows out. तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और इसको कट करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ये 50 हो गया और ये n का वैल्यू 100। क्लियर है बच्चों? हाँ सर, बस 1 मिनट। So could you please explain this again? Actually, I got disconnected. There is a cone-shaped container, and we are putting lead shots inside it, so that 1/4 of the volume of water which was there inside it, we had filled this with water, and then we put the lead shot, जिसके वजह से 1/4 of the water overflow कर गया। तो जितना water overflow किया,
वो किसकी वजह से किया? लेड शॉट जो उसमें वॉल्यूम डाले हैं उसकी वजह से हुआ है. So volume of the lead shots which I have put inside is equal to volume of water which has flown out. So volume of water which has flown out is 1/4 of the volume of the cube is equal to one lead shot. एक lead shot का volume 4/3 pi r cube है, उसको n से multiply कर दिया क्योंकि number of lead shots n है, right? So n into volume of one lead shot is equal to volume of the cone. इसको सॉल्व करके n का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया कि कितने लेड शॉट्स हमें डालने पड़े थे, वो हमें निकल जाएगा 100 लेड शॉट्स डालने पड़ते. क्लियर है? Yes, sir. Thank you, sir. Your homework is surface area and volume assignment पहले वाले से. Assignment 1 questions 1 to 10 10 questions करने. मैं अभी ग्रुप में भेज भी दूंगा. ठीक है? This is from the first booklet, assignment 1, question number 1 to 10, surface area and volume. This is your homework. Okay?